समय हूं। युगों से इस बात का साक्षी हूं कि जीवात्मा जैसे कर्म करता है वैसे ही फल की प्राप्ति उसे होती है, और कर्म के ही संबंध अनुसार जीवात्मा जन्म, मरण और 84 लाख योनियों को प्राप्त करता है। आप सब भी 5 कर्म के बंधन के अनुसार जन्म और मरण को प्राप्त कर रहे हैं, और वे बंधन हैं न्यास बंध, ऋणानुबंध, उपकारी बंध, उदासी बंध और वैराणुबंध। हमारे घर में जन्म प्राप्त करने वाला कोई भी जीवात्मा वह हमारी संतान के रूप में आता जरूर है। हम उसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन उसके जन्म धारण करने का हेतु यही 5 बंधनों में से एक है। इन 5 बंधनों के कारण ही हमारे अपनों द्वारा हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इन कर्मों के बंधनों से मुक्ति होने का मार्ग इस नाटक में दिखाने का प्रयत्न किया गया है। आइए देखते हैं हमें अपने कर्मों के बंधनों से कौन बचा सकता है, इस नाटक के द्वारा जिसका नाम है प्रेम की परिभाषा। मैं समय हूं। युगों से इस बात का साक्षी हूं कि जीवात्मा जैसे कर्म करता है वैसे ही फल की प्राप्ति उसे होती है, और कर्म के ही संबंध अनुसार जीवात्मा जन्म, मरण और 84 लाख योनियों को प्राप्त करता है। आप सब भी 5 कर्म के बंधन के अनुसार जन्म और मरण को प्राप्त कर रहे हैं, और वे बंधन हैं न्यास बंध, ऋणानुबंध, उपकारी बंध, उदासी बंध और वैराणुबंध। हमारे घर में जन्म प्राप्त करने वाला कोई भी जीवात्मा वह हमारी संतान के रूप में आता जरूर है। हम उसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन उसके जन्म धारण करने का हेतु यही 5 बंधनों में से एक है। इन 5 बंधनों के कारण ही हमारे अपनों द्वारा हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इन कर्मों के बंधनों से मुक्ति होने का मार्ग इस नाटक में दिखाने का प्रयत्न किया गया है। आइए देखते हैं हमें अपने कर्मों के बंधनों से कौन बचा सकता है, इस नाटक के द्वारा जिसका नाम है प्रेम की परिभाषा। ये है श्रीमान जमनादास गोर्धनदास मेहता। अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए पूरा जीवन जिन्होंने खूब मेहनत की, लेकिन मुश्किल से अपने एक लौते बेटे को पढ़ा सके। अपने परिवार को अच्छा जीवन मिले इस हेतु से अपना गांव सब कुछ छोड़कर मुंबई में आ गए और अपने बेटे सिद्धार्थ और अपनी पत्नी सुशीला के साथ यहीं बस गए। जय श्री कृष्ण बापूजी, केम छो? तबियत पाणी सारा? बस बेटा ચાલ્યા રાખે છે। હવે ઉંમરનું કામ ઉંમર કરે છે। लेकिन बेटा तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो?
अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बापूजी। हमारे घर आज एक छोटी सी पार्टी रखी है। उसमें हमारे दोस्त और नजदीक के सगे संबंधी आने वाले हैं। बेटा पार्टी किस खुशी में है? बापूजी, आपके आशीर्वाद से आपके इस बेटे सिद्धार्थ जमनादास मेहता ने अपनी कड़ी मेहनत करके 5,000 करोड़ का यह मेहता एम्पायर खड़ा किया। मेहता एक्सपोर्ट्स, मेहता टेक्सटाइल्स, मेहता इंफ्रा जैसी 12 से ज्यादा कंपनियों को अपने बलबूते पर खड़ा किया। आपने पूरे जीवन नौकरी कर मुझे पढ़ा लिखा कर नौकरी करने लायक बनाया था बापूजी, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षाएं आसमान को छूने की थी। इसीलिए मैंने बिजनेस को लक्ष्य बनाया था और आज उसी लक्ष्य को मैं हासिल कर चुका हूँ। एक कवि ने बहुत अद्भुत बात कही है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बापूजी, आपके पोते भी बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन से अपनी शिक्षा पूरी करके भारत लौट रहे हैं। बस आत्मसंतोष इस बात का है कि कब बच्चे अभी कारोबार संभाल ले और इसी कारोबार को आगे बढ़ाए। अभी थोड़ी देर में बच्चे आते ही होंगे। उनके ग्रैंड वेलकम में पार्टी रखी है। लो, बच्चे आ गए। जय श्री कृष्ण दादू। हे डैड, हाउ आर यू? मेरे बच्चों, आई लव यू लॉट। इन 5 सालों में कितने बड़े हो गए। वी लव यू अ लॉट टू पापा। पापा, सनी ने तो लंदन में भी जुगाड़ करके बिजनेस चालू कर दिया था। उसने तो पढ़ते पढ़ते भी 3 लाख पाउंड्स कमा लिए। ओह, दैट्स वंडरफुल माय किड। मोरना इंडा ने चितरवाना ना हो, एक गुजराती के खून में ही बिजनेस होता है। डैड, सबसे अच्छे परसेंटेज और डिग्री अश्विन भैया की है। MBA 92%. राहुल हैज सिक्योर्ड 75% इन डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे 83% BMS एंड सनी विथ 69% इन ग्रेजुएशन। हम सब कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट में थे, लेकिन एक ही कमरे में रहते थे। बच्चों, जिनका अन्न एक होता है उनका मन भी एक होता है। आज इन बूढ़ी आंखों को ये दृश्य देख के बहुत आनंद हो रहा है कि मेरा सिद्धार्थ, मेरा दशरथ, मेरा अश्विन, मेरा राम, मेरा सनी, मेरा लखन, मेरा चिराग, मेरा भरत, मेरा राहुल, मेरा शत्रुघ्न। दादू, तो क्या आप मुझे और अश्विन भैया को वनवास पर भेजेंगे? शुभ शुभ बोलो बेटा, कहीं हमारे इस प्यारे से परिवार को किसी की नजर ना लग जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, अब तो आपको अपने इतने बड़े एम्पायर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 कंपनियां हैं, 4 बेटे हैं, 3-3 कंपनियां बांट दीजिए चारों बेटों में और चले जाइए तीर्थ यात्रा पर। वैसे भी जमनादास बापा ने तो आपको नौकरी करने के काबिल ही बनाया था, फिर भी आपने अच्छा कारोबार जमाया है। हाँ, ये बात और है कि नानावटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के आगे मेहता ग्रुप का नेटवर्क ओनली 10% है। हम तो खानदानी रईस है। मोहित भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। बड़े बड़े घरों में बंटवारे करके अकेले रहते हैं। वहाँ की सुख सुविधा परिवार के लोगों से ज्यादा उनके यहाँ काम करने वाले नौकर इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है, नानावटी ग्रुप में भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। मामला कोर्ट तक पहुँच गया है। बड़े बड़े आलीशान महल जैसे बंगलों में न सुख, न चैन, न कोई संस्कार। पूरा परिवार कभी साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता। क्या मतलब है इन पैसों का? और हाँ, हमारे घर में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे अलग नहीं होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और एक बात, आज की खबर के अनुसार नानावटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर में बंटवारे को लेकर भारी गिरावट आई है। ऑन एन एवरेज 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। खैर, हम कोई खानदानी रईस नहीं है, लेकिन आज मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मार्केट में धूम मचा कर रखी है। हाँ, और मेरे बच्चे बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो ये खबर मार्केट में फैलते ही शेयर की फेस वैल्यू बढ़ जाएगी।
और एक दिन में 2000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ये सब आपको पता तो होगा ही। कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ सर। मार्केट में, बिजनेस अरीना में, मीडिया में, सब जगह एक ही बात है, एक ही न्यूज फ्लैश हो रही है। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज रीचिंग टू द न्यू हाइट्स ऑफ बिजनेस। थैंक्स टू यू माय सॉलिसिटर, माय फाइनेंशियल एडवाइजर, माय मनी मेकर। ये सफलता आपके एडवाइस के बिना कहाँ पॉसिबल थी। यशवर्धन अंकल, आई होप बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आप हमें भी ऐसे ही गाइड करेंगे जैसे पापा को कर रहे हैं। ऑफ कोर्स माय डियर, मैं थोड़ी सेवा कर रहा हूँ। तेरे पापा मुझे हर एडवाइस की मोटी फीस देते हैं। पैसों मारो परमेश्वर छे भाई। सुपर्ब डैड, आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? चिराग, एक दिन पापा बता रहे थे, फॉर द सक्सेस ऑफ द पर्सन्स वेल्थ ही शुड हैव अ फैमिली वेल्थ एडवाइजर एंड अ गुड लॉयर, एंड सीक्रेट ऑफ फैमिली हेल्थ इज दे शुड हैव अ गुड फैमिली डॉक्टर। अरे हाँ, डॉक्टर से याद आया, हमारे फैमिली डॉक्टर मिस्टर विश्वजीत जोशी कहाँ रह गए? Congratulations for a wealthy success, Siddharth sir, and welcome to India, kids. How are you doing? डॉक्टर विश्वजीत अंकल, प्लीज डोंट कॉल अस किड्स। अब तो शादी की उम्र हो गई है। सिद्धार्थ सर, इशारा समझ रहे हो? सबसे छोटा वाला ही शादी की बात कर रहा है। अब तो समझदार को इशारा ही काफी है। बापूजी, सिद्धार्थ सर, मोहित भाई यहीं पे है। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझसे आपके बेटे अश्विन के साथ उनकी बेटी प्राप्ति के साथ रिश्ते की बात की थी। नानावटी परिवार फिलहाल बिजनेस में बहुत नुकसान कर रहा है। मोहित भाई नानावटी सिद्धार्थ जमनादास मेहता के समधी बनकर मेहतास के शेयर मार्केट के गुडविल का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मतलब अपने शेयर्स की फेस वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। वकील साहब, कह दो हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा, इतनी जल्दबाजी क्यों? थोड़ा सोच समझ कर जवाब देंगे। बापूजी, माफ करना, लेकिन मोहित भाई त्रिकम भाई नानावटी खानदानी रईस है। हमारी बहू हमारे टक्कर के खानदान से होनी चाहिए। यह केवल एक शादी नहीं है, कॉर्पोरेट लेवल पर 2 बड़ी कंपनीज का मर्जर है। उनकी बेटी प्राप्ति जैसे ही हमारे घर की बहू बनेगी, हमारे नानावटीज के साथ कंपटीशन खत्म। उल्टा हमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, उसमें मोहित भाई कभी टांग नहीं अड़ाएंगे। मैंने तो मन बना लिया है। यशवर्धन, हाँ कर दो। सभी रिश्तों को पैसों से तोलना कितना उचित है। यह कोई बिजनेस डील थोड़ी ना है। शादी 2 आत्माओं का मिलन है। इसे सोच समझ के फैसला लिया जाना चाहिए। पता नहीं आज तेरा मित्र घनश्याम अब तक क्यों नहीं आया। बापूजी, मैं चाहूंगा आप इस फैसले में किसी बाहर के व्यक्ति को इन्वॉल्व ना करें तो ही बेहतर होगा। और रही बात घनश्याम पटेल की, तो वो मुझसे ज्यादा आपका मित्र है। उम्र से पहले ही निवृत्त हो गया है, इसीलिए जय श्री સ્વામિનારાયણ જમનાદાસ કાકા। જય શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાર્થ, મારા મિત્ર, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન વ્યવસાયમાં અદ્ભુત પ્રગતિ કરવા માટે અને તારા બધા જ પુત્રો લંડનથી પાછા શિક્ષણ પૂરું કરીને આવ્યા તે માટે। થેન્ક્સ ઘનશ્યામ। ઘનશ્યામ, એક વાત કહું, આપણે સ્કૂલ સાથે ગયા, રમ્યા પણ સાથે, ગ્રેજ્યુએશન પણ સાથે કર્યું, પણ આજે તું હજી 1 BHK ના ફ્લેટના લોનના હપ્તા ભરે છે અને હું આજે 7000 કરોડનો માલિક બની ગયો છું। કમાવાની ઉંમરમાં તે સત્સંગ, સેવા, ભક્તિ, પૂજાપાઠ શરૂ કરી દીધા, જેથી જીવનમાં પૈસો કમાવાનો રહી ગયો। મારા મિત્ર, અમારા ગુરુ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન સંત પરમ પૂજ્ય સદગુરુ નિત્ય સ્વરૂપદાસજી સ્વામી સત્સંગ જ્ઞાન ગંગારૂપી ઘર સભામાં જે રોજ રાત્રે 9 થી 10:30 વાગ્યા સુધી ભજન આસ્થા, લક્ષ્ય ચેનલ, કર્તવ્ય ચેનલ, સરદાર કથા યુટ્યુબ જેવા પ્લેટફોર્મ પર લાભ આપી રહ્યા હોય છે, એમની એક શિક્ષાના વચન તને કહું છું કે પૈસો જીવનમાં બહુ કાંઈ છે પણ સર્વ કાંઈ નથી। જીવનમાં સંસ્કાર અને સદાચાર માનવીય જીવનનું આભૂષણ છે। અને એક વાત ઘરસભામાંથી હજી એક તને કહીશ, જોજે સિદ્ધાર્થ, તારા સંતાનો જ્યારે યુવાન થાય ને, એમનો સંબંધ જ્યારે તું કરે ને, ત્યારે ફક્ત ચામડું અને પૈસો ન જોઈશ, સંસ્કાર પણ જોજે। કપડા વગરનો માણસ જેમ શોભતો નથી ને, એમ સંસ્કાર વિહોણું જીવન પણ શોભતું નથી। वाह घनश्याम अंकल, आपने तो पुरानी बाल सभा की यादें ताजा करवा दी। मुझे तो लगा जैसे कोई माइथोलॉजिकल सीरियल चालू हो गया है। घनश्याम अंकल, एक बात बोलूं, मैरिजेस आर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। 2 युवक युवती एक दूसरे को पसंद करे तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए।
Marriages should not be based on caste, creed and religion. मैं तो मेरे पापा जहाँ कहेंगे वहीं शादी कर लूंगा। बिग बी, आप तो सचमुच आज्ञाकारी पुत्र का रोल निभाने लगे। ठीक है बच्चों, उड़ा लो मजाक इस गरीब भक्त का। આજે સ્વતંત્ર વિચારધારાના માનવીને પરમાત્મા તથા એમના સત્પુરુષો દ્વારા સ્થાપિત હિન્દુ સનાતન ધર્મની વૈદિક પરંપરા કાલ્પનિક લાગે છે। સિદ્ધાર્થ, મને બરાબર યાદ છે, તે જ્યારે સફળતા મેળવીને ત્યારે તે એક સૂત્રની રચના કરી હતી। સક્સેસ ઓફ ફેમિલીઝ વેલ્થ ઇઝ હિઝ ફેમિલી ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર એન્ડ ફેમિલી લોયર. સક્સેસ ઓફ ફેમિલીઝ ગુડ હેલ્થ ઇઝ હિઝ ફેમિલી ડોક્ટર. આઈ વુડ લાઇક ટુ એડ એન એસેન્સ ટુ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ. મને આમાં એક પંક્તિ ઉમેરવી છે. રીઝન ઓફ ફેમિલી મેમ્બર્સ હેલ્ધી સોલ ઇઝ હિઝ ફેમિલી સદગુરુ. જેમ ફેમિલી લોયર જરૂરી છે, જેમ ફેમિલી ડોક્ટર જરૂરી છે, તેમજ જીવાત્માના આત્યંતિક કલ્યાણ માટે એક સાચા ફેમિલી સદગુરુ અતિ આવશ્યક છે. સારું, રજા લઉં છું. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. अरे बेटा, जमीने तो जा. અરે કાકા, આપને તો ખબર જ છે, અને ઘર સભાનો સમય પણ થઈ ગયો છે. આજના આનંદના દિવસથી કાકા આપને એક નિયમ આપું છું. કોઈ દિવસ ઘર સભા જોવાનું ચૂકશો નહીં. બાકી કાલે નિરાતે આવું છું. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ચોક્કસ બેટા, આવજે હો. જય સ્વામિનારાયણ. વકીલ સાહેબ, મારા વતી મોહિતભાઈનું મોઢું મીઠું કરાવો. મને આ સંબંધ મંજૂર છે. શું વાત છે. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मेहता फैमिली फ्रॉम नानावटी फैमिली. कॉन्ग्रेचुलेशंस अश्विन बेटा. मेरी तरफ से एक बर्फी का पीस तो खाना ही पड़ेगा. सिद्धार्थ सर, प्लीज बी कॉशियस, आपको डायबिटीज है. ओके डॉक्टर, आई विल स्टे अवे फ्रॉम स्पीच. ચાલો સિદ્ધાર્થભાઈ, રજા લઉં. બાકી સગાઈ અને લગ્ન કેમ કરવા એ પછી નિરાતે ડિસ્કસ કરશું. ઓકે, બાય એવરીવન. છોકરાઓ, તમે પણ થાક્યા હશો. એવરીવન ગો ટુ સ્લીપ. બાપુજી, આપ ભી સો જાઈએ. હું તો આજથી જ ઘર સભા જોઈને જ સૂઈશ. ને કહું છું, તમે તો સંસ્કારી બનજો. તમારા સંતાનોને પણ સંસ્કારી બનાવો, જેમાં સંસ્કારનું સિંચન કરશો. તમે ગ્રહસ્થી છો, તમારા સંતાનોના સંબંધો કરો ને તો પણ સંસ્કારનું અનુસંધાન રાખીને કરશો. તમે સંબંધ જોવા જાઓ ને, યાદ રાખો, સંબંધ જોવા જાઓ ને તો તમે ભોજન કર્યા પછી બેસો ને, તમારે એ પરિવાર સંસ્કારી છે કેમ એની ખાતરી કરી હોય ને તો ભોજન કરીને બેસો ને પછી કહેજો વચરામૃતનો વાંચ છે. અને જવાબ મળે વચરામૃત નથી ઘરમાં, તો કેવું ભક્તિ ચિંતામણી લાવો, ભક્તિ ચિંતામણી નથી તો સત્સંગીઓને લાવો, સત્સંગીઓને નથી, હરિલામૃત લાવો, હરિલામૃત નથી, ભાગવતજી લાવો, ભાગવતે નથી, ગીતાજી લાવો, ગીતાજી નથી, રામાયણ લાવો, રામાયણ નથી, કોઈ પણ શાસ્ત્ર લાવો, કોઈ શાસ્ત્ર नहीं तो कहो तो અહીં हमारे संबंध करवानो थातो पण 3 महीने बाद अश्विन की शादी प्राप्ति से हो गई. चिराग ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की, इसीलिए सिद्धार्थ ने उसे घर से निकाल दिया. राहुल ने अपने कॉलेज में पढ़ती गरीब लड़की से लव मैरिज कर लिया. सनी का तो पहले से ही अफेयर था एक चौल में रहने वाली गुजराती लड़की के साथ, तो उसने उसके साथ शादी कर ली. पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है. યસ અશ્વિન, બોલો. પપ્પા, તમે મમ્મીને સમજાવી દેજો. રોજ રોજ પ્રાપ્તિને રસોઈ નથી આવડતી, ઘરકામ નથી આવડતું, એના લીધે મેણા ન મારે. पापा, प्राप्ति एक बड़े घर से, उसकी परवरिश अमेरिका में हुई है. उसे इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन और ये सो कॉल्ड जॉइंट फैमिली कल्चर के बारे में पता नहीं है. पापा, माँ एक मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए उनका बिहेवियर ऐसा है. शी कैन नॉट एक्सेप्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ वुमेन, जबकि प्राप्ति इज बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून. નાનાવટી ફેમિલી પહેલાથી ગર્વ શ્રીમંત છે. એના પરિવારમાં બધા જ ઓક્સફર્ડ અને હાર્વર્ડમાં ભણેલા છે, જ્યારે તમે અને મારી માં આ શહેરના સરકારી સ્કૂલમાં. જોયું सिद्धार्थ, मैंने पहले ही कहा था शादी करने में और रिश्ता जोड़ने में जल्दबाजी मत करो. देखा, उस काले नानावटी ने आज तेरे बेटे को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया है. कैसे अपने ससुराल वालों की तारीफ कर रहा है और तेरी और सुशीला की बुराई. अश्विन, हम पहले से अमीर नहीं थे. मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर इस लायक बनाया कि वह तुम्हें लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ा सके. 7,000 करोड़ का यह कारोबार तुम्हें विरासत में दे सके. सिर्फ 3 महीनों में तुम अपने काले ससुर के बस में हो गए कि तुम अपने माता पिता को कोसने लगे.
दादाजी, माइंड योर लैंग्वेज। एक शब्द भी मेरे ससुर जी के खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अश्विन, नालायक, इस तरह से बात करते हैं अपने दादाजी से? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था? डैड, अब माँ को समझाने के बदले मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अश्विन भाई, नाउ इट्स अ लिमिट। अगर माँ भाभी को हमारे घर के तौर तरीके सिखाने के लिए रोकती टोकती है तो उसमें क्या गलत है? क्या भाभी की माँ ने यानी आपकी सासू माँ ने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा होगा? तू छोटा है, छोटा बनकर ही रहेगा, उसी में तेरी भलाई है। वैसे भी बिजनेस में हम तेरी वजह से, तेरे नए नए आइडियाज की वजह से काफी नुकसान उठा चुके हैं। एक तरफ ऑफिस में तुम चैन लेने नहीं देते और यहाँ घर पर उस चाल में रहने वाली डाउन मार्केट लड़की से शादी करके अपने मेहता खानदान की नाक कटवाई, और अब अपनी आदतों की वजह से तुम्हारी पत्नी संगीता ने तुम्हारी भाभी के नाक में दम कर रखा है। अश्विन भाई, गरीब होना क्या गुनाह है? संगीता गरीब घर से है तो क्या वो इस घर में नौकरानी का काम करेगी और भाभी उससे अपने पर्सनल काम करवाएगी? भाभी अगर बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है तो संगीता भी अपने गरीब पिता की लाडली बेटी है। मेरी पत्नी का अपमान मैं नहीं सहूंगा। तेरी ये हिम्मत, अपनी माँ समान भाभी के लिए ऐसे शब्द, धिक्कार है तुझे। अब तेरे साथ एक छत के नीचे मैं नहीं रह सकता। अश्विन भाई, सनी, तुम दोनों अपनी पत्नियों का ऐसा पक्ष ले रहे हो जैसे वो कोई सती सावित्री है। दोनों ने मिलकर मेरी पत्नी जानवी का जीना हराम कर रखा है। भाभी का पक्ष ले तो संगीता खाने में नमक डाल देती है, और संगीता का पक्ष ले तो प्राप्ति भाभी हाथ मोड़ देती है। माँ भी ये सब अत्याचार चुप रहकर कैसे देख सकती है? पापा, एक काम कीजिए, अब हम एक घर में नहीं रह सकते। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की 12 ब्रांचेस है। हम तीनों के नाम 4-4 कंपनियां कर दीजिए और इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दीजिए। सब अलग रहेंगे और खुश रहेंगे। वाह राहुल भैया वाह, कितनी सफाई से तुमने बंटवारे का हिसाब बता दिया। क्रिश्चियन लड़की से प्यार किया, शादी की, कोई गुनाह नहीं किया है, और पापा ने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल भी नहीं किया है। मुझे मेरा हिस्सा मिलना ही चाहिए। पापा ने मुझे कुछ नहीं दिया और तुम तीनों भाइयों ने मेरा हिस्सा हड़प कर लिया तो सबको घसीट कर अदालत ले जाऊंगा और अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। सिद्धार्थ सर, जमुना दास काका, अश्विन, राहुल, चिराग और सनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेहता इंफ्रा नाम की हमारी कंपनी ने जो जमीन खरीदी थी और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों का बनाया था, वो जमीन के पेपर्स फेक निकले और जमीन सरकारी निकली। कोर्ट में आज ही उसकी हियरिंग हुई और हमने उस जमीन पर इतने सालों तक कब्जा कर रखा था, और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेमोलिशन और पेनल्टी और मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की अदर कंपनीज की ओनरशिप भी डिफॉल्टर होने की वजह से हाई कोर्ट ने सीज कर दी है। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनी का नेटवर्क एज ऑफ टुडे 7,000 करोड़ एंड कंपनसेशन वैल्यू है 8,000 करोड़। मतलब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का सब कुछ बिकने के बाद भी 1,000 करोड़ का नुकसान। लो, कर लो और बंटवारा। बंटवारा तो फिर भी होकर रहेगा। मैं अपने ससुर जी मिस्टर मोहित भाई त्रिकम भाई नानावटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी कंपनी टेक ओवर कर ले। मर्जर होगा, आई विल बी सेफ, आप अपना देख लो। बेटा अश्विन, तू इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? मैं, तेरी माँ, तेरे दादाजी सब कहाँ जाएंगे? परिवार को जन्म देने वाला पिता दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। पापा, डोंट बी इमोशनल। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पूना के पास बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है। मैं वहाँ पैसे भर दूंगा, आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। अश्विन नालायक, इससे अच्छा होता कि मुझे तेरी जगह पत्थर जन्मा होता। जल्दी से डॉक्टर विश्वजीत अंकल को कॉल करो। हेलो विश्वजीत अंकल, पापा के चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, आप जल्दी आइए।
माइनर कार्डियक अरेस्ट था। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। नाउ ही इज आउट ऑफ द डेंजर। इन्हें आराम करने देना, ध्यान रहे इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो। જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। સિદ્ધાર્થ, મારા મિત્ર, આ બધું શું થઈ ગયું? હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ, ભાઈ બધું જ સારું થઈ જશે। જમનાદાસ કાકા, સિદ્ધાર્થની બિલકુલ ચિંતા ના કરશો, એ ખૂબ જ હિંમતવાળો છે, બધું પાછું બેઠું કરી લેશે। હું હારી ગયો ઘનશ્યામ, હું હારી ગયો। આઈ લોસ્ટ એવરીથિંગ માય ફ્રેન્ડ। પૈસા કમાવાની હોડમાં હું ભૂલી ગયો। પૈસો સર્વોકાય નથી। મારા સંતાનોને હું સંસ્કાર આપતા ભૂલી ગયો। આજે મારા પર 1000 કરોડનો કરજો છે, એ મને નથી મૂંઝાવતો, પણ મારા સંતાનો કુસંસ્કારી બન્યા, એમને કેમ સંસ્કારી બનાવીશ એની મને चिंता છે। अंकल प्लीज रिलैक्स। हमारे गुरुवर श्री परम पूज्य सदगुरु नित्य श्रद्धा जी स्वामी ने घर सभा के माध्यम से अद्भुत उपदेश दिए। कभी हरे कृष्ण से मत कहना मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कहना मेरे हरे कृष्ण बड़े हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं अंकल। ऐसे संस्कार मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाया, इसी बात का दुख है। જાગ્યા ત્યારથી સવાર સિદ્ધાર્થભાઈ, ઇટ્સ નેવર ટુ લેટ। અને ધંધામાં નુકસાન નફો તો ચાલ્યા રાખે, એની અસર તમારી તબિયત પર પડે એ યોગ્ય ન કહેવાય। તમે તો તમારા હુનરથી 7,000 કરોડના માલિક બની ગયા હતા, તો આ 1000 કરોડનો કરજો એ શું ચીજ છે? મને વિશ્વાસ છે તમારી કાબિલિયત પર કે તમે ફરીવાર ઉદ્યોગ જગતમાં મહેતા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝનું નામ મોખરે કરશો। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। આપણે ભણ્યા સાથે, મોટા સાથે થયા, રમ્યા પણ સાથે, પણ મેં મારા પૈસાના અને સ્ટેટસના અહંકારમાં તારું અપમાન કરી નાખ્યું, અને આજ મારી પડતીના સમય તોય તું ઊભો છે મારી। तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिन्हें पोताना मान्या था ये आज पारका થઈ ગયા, जिनके लिए इतना बड़ा कारोबार, ये आलीशान घर, गाड़ियां, 7,000 करोड़ का कारोबार, ये सब जी जान लगाकर हासिल किया, जिन्हें जान से भी ज्यादा प्यार किया, वही मेरे कलेजे के टुकड़े आज इस प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहते हैं। बिजनेस में लॉस रिकवर हो सकता है, मैंने तो रिश्ते में नुकसान किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? जिन्हें कलेजे से लगाकर रखा कोई आँच ना आने दी, खुद गिले में सोकर जिन्हें सुविधाएं दी, ऐसे बच्चे आज हमें वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहे हैं। यही दिन देखने से पहले मौत क्यों नहीं आ जाती? ये सब कुछ कर्म संबंध है मित्र। रिलेटिव्स आर बाय चांस एंड नॉट बाय चॉइस। हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ही हमें हमारी संतानें प्राप्त हुई, और उन्हें हम हमारे गुरुवर्य श्री परम पूज्य सदगुरु नित्य स्वरूपदास जी स्वामी जी ने घर सभा के माध्यम से एक अद्भुत उपदेश दिया था, जो आज मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, सदगुरु गुणादितानंद स्वामी एम कहता कि आ जीवात्माना माथे करोड़ो कोटड़ीओ पापनी भरी छे, एमांथी अड़धामांथी आ देह अने अड़धामांथी देहना संबंधी बनाव्या छे। हमें जो सुख दुख प्राप्त होता है वह हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ही होता है। इसीलिए नियति को अपना काम करने दो और हमें अपना। सिद्धार्थ। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज साइन दिस पेपर। What papers are they? सर, हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसे हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। होप टू द बेस्ट। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, शायद हम ये केस जीत जाए तो हमारा सारा पैसा और प्रॉपर्टीज जो कोर्ट ने सील किए हैं वो हमें वापस मिल जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। शायद पैसे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन ये रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं। एक बार टूट जाए फिर उन्हें जोड़ो तो गांठ तो रह जाती है। घनश्याम मेरे दोस्त, क्या तेरे सत्संग में या तेरे गुरुजी के पास रिश्तों को जोड़ने का कोई उपाय है? सर प्लीज आप इतनी बातें मत कीजिए, प्लीज रिलैक्स और सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको ज्यादा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है सर। डॉक्टर साहब, जो हो मारा सिद्धार्थ ने कहीं सही न हो जाए। डॉक्टर, मैं जब मेरे दोस्त घनश्याम से बात करता हूँ और जब वह सत्संग और उसके गुरुश्री और घर सभा की बातें करता है तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। ऐसा फील होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्लीज बोलो ना घनश्याम, क्या यह खोए रिश्ते मुझे वापस मिल सकते हैं? परम पूज्य गुरुवर्य श्री कहते हैं कि यदि मन में निस्वार्थ भाव हो, पूर्ण पुरुषार्थ हो और परमात्मा के प्रति संपूर्ण विश्वास हो,
तो कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। हाँ, तुम्हारे खोए हुए रिश्ते तुम्हें वापस मिल सकते हैं मेरे दोस्त। मगर कैसे? विचारों के परिवर्तन से। चेंज ऑफ विजन इज अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। विचारों का परिवर्तन, वह कैसे? रिलैक्स भाई, बताऊं छू। विचारों का परिवर्तन सभी जगहों पर और सभी स्थानों पर बदलाव ला सकता है। वह फिर पूरे विश्व की बात हो अथवा हमारे देश की या फिर हमारे घर की। बेटा घनश्याम, હું કઈ સમજો નહીં, જરા ચોખવટથી વાત કે। हाँ जमनादास काका, तो सांभड़ो। आज जैसे आपका यह छोटा सा परिवार भी बंटवारे की ओर चला है, उसी तरह मेरा भारतवर्ष का यह परिवार भी बंटवारे की ओर चला है। नफरत की आंधी में पूरा देश जल रहा है। राजकीय पक्षों ने विकास के मुद्दे को नजरअंदाज कर धर्म के नाम पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। देखिए, मुझे गलत मत समझना, मैं भी सनातन हिंदू धर्म की संतान हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, परंतु हिंदू होने का अर्थ केवल हाथ में भगवा झंडा लेकर मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो, उन्हें मार डालो, जला दो, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, वही है? कदापि नहीं। आज जिसे भी हिंदू होने पर गर्व है, उसे संपूर्ण व्यसनों का त्याग कर देना चाहिए। नित्य अपने इष्ट देव के दर्शन करने मंदिर जाना चाहिए। माथे पर तिलक, शिखा, गले में तुलसी की माला अवश्य होनी चाहिए। संतों के प्रति पूज्य भाव होना चाहिए एवं रामायण, श्रीमद् भागवत, गीता जी, सत्संगी जीवन जैसे सत्शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। यही है हिंदुत्व की सही पहचान। हिंदुत्व भक्तिमय जीवन की परिभाषा है। अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना, जीवन में प्रभु की भक्ति करना और नीतिमय जीवन बनाकर अपना पेट पालना, यही सच्चे हिंदुत्व की पहचान है। रही बात मुसलमानों की, तो यहाँ पर विचारधारा बदलने की जरूरत है। किसे? तो हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे नेताओं को और स्वयं मुसलमानों को। यदि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक बात हमें और मुस्लिम भाइयों को दोनों को समझनी होगी, और वह है कि भारत का कोई भी मुसलमान अपनी 4 बेटी आगे चला जाए तो वास्तविकता में मुसलमान नहीं है। उसकी 5वीं पीढ़ी पर कोई जटाशंकर जोशी या फिर कोई कृष्णलाल पांडे ही मिलेगा। हमारे उन भाइयों के मंताओं ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। आज उनके द्वारा मदरसों में लव जिहाद की तालीम दी जा रही है। इसे बंद करने का एक ही उपाय है, मुसलमानों की हिंदू धर्म में घर वापसी। और मुझे आनंद है इस बात का कि हमारे सनातन हिंदू धर्म द्वारा मुसलमानों को घर वापसी की शुरुआत हो चुकी है। बस यहीं पर विचारों के परिवर्तन की जरूर है। भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने अवतार कार्य के दौरान असुरों का नाश नहीं किया, परंतु उनकी आसुर वृत्ति का नाश किया है। ठीक उसी तरह हमें मुसलमानों का नाश नहीं करना, उनकी आसुर विचारधारा का नाश करके उन्हें हिंदू धर्म में अपना लेना चाहिए। घनश्याम भाई, मैं अपने समधी सिद्धार्थ भाई का हाल पूछने आया था। आपने जब बात का प्रारंभ किया, मुझे दिलचस्पी जागी, इसलिए मैं आपकी बात चुपचाप सुनता रहा। आपके विचारों को मेरा नमन है। यदि यही बात हम जल्द से जल्द अमल करेंगे तो देश में सुख, शांति और समृद्धि होगी। घनश्याम अंकल, एक बात तो बताइए, आपको इतने अच्छे विचार आते कहाँ से है? राहुल बेटा, मेरी क्या हैसियत है कि मैं यह सब कुछ सोच पाऊं? यह तो मेरे सदगुरु की महान विचारधारा है, जो इस हिंदू सनातन धर्म की पतित पावन संत परंपरा का उत्तरदायित्व कर रहे हैं। भटके हुए समाज को घर सभा के माध्यम से सही मार्ग दिखा रहे हैं। घर सभा किसी के प्रति राग और द्वेष को नष्ट कर देती है। सही मायनों में यह घर सभा तो प्रेम की परिभाषा है। घनश्याम अंकल, आपने देश में चल रहे गृह युद्ध को शांत करने के लिए विचारों के अद्भुत परिवर्तन का मार्ग बताया। अब कुछ हमारे इस घर में चल रहे सास बहू, भाई भाई, पिता पुत्र के विचारों के युद्ध के अंत का भी उपाय बता दीजिए। हाँ बेटा घनश्याम, जो मारो आ संयुक्त परिवार तूटतो बची जશે ને તો તારો બહુ મોટો ઉપકાર થશે। પારિવારિક જીવનમાં પણ વાત વિચારોની જ છે। કોઈ દિવસ લગ્ન પહેલા કોઈ પણ દીકરાઓને એમ થયું કે અમારે અલગ રહેવા જવું છે? જે માતા પિતા પોતાની વાલસોઈ દીકરીને સાસરે ગયા પછી 6 મહિના કે વર્ષ દિવસમાં પોતાના સાસુ સસરાથી પોતાના પતિને અલગ રહેવા માટે મનાવી લે છે, એવી સલાહ આપતા હોય છે ને, અને
પોતાની પુત્ર વધુ પાસે પોતાની સેવા કરે અને સંયુક્ત પરિવારમાં રહે એવી અપેક્ષા રાખતા હોય છે. એસા દોગલાપન ક્यों? આજે પ્રત્યેક યુવાન યુવતીને મારો પ્રશ્ન છે, શું તમે લગ્ન થયા પછી પોતાના ઉંમરલાયક માતા પિતાને મૂકીને તમારા એક કે બે બાળકોને સાથે લઈને અલગ રહેવા જતા રહો છો? એને સ્વતંત્રતા માનો છો? આ પ્રશ્ન આજે પ્રત્યેક ઘરનો છે. આને સ્વતંત્રતા બિલકુલ ન કહેવાય. આજે કહેવાતી મોડર્ન જનરેશનની સ્ત્રીઓ ઘણી વાર કહેતી હોય છે કે આપણી પણ કંઈક લાઈફ હોય ને, થોડીક પ્રાઇવસી તો જોઈએ ને. આ વિચારધારાવાળા યુવાન યુવતી ખાસ સાવધાન બને. તમે તમારા મનનું ધાયરું કરવા માટે પોતાના માતા પિતાનો ત્યાગ કરો છો. એ સ્વતંત્રતા નથી. તમે તો તમારા મનના ગુલામ છો, ગુલામ. વડીલોની છત્રછાયામાં જે બાળકોનો ઉછેર થાય છે એ બાળકો બહુ ભાગ્યશાળી હોય છે. જે બાળકોનો ઉછેર એના દાદા દાદીના હાથે થયો હશે એ બાળકનું જીવન તમે તપાસ કરી જોજો, એની વિચારધારા અદ્ભુત હશે. જે માતા પિતા પોતાની વાલસોઈ દીકરીને સાસરીએ ગયા પછી પોતાના સાસુ સસરા કે દિયર કે જેઠ કે નણંદ થી જુદા થઈ જવાની સલાહ આપતા હોય છે, એમણે તો પોતાની દીકરીનો સંબંધ અનાથાશ્રમના છોકરા સાથે કરવો જોઈએ, જેનું કોઈ સગું હોય જ નહીં. મારા ગુરુશ્રી પરમ પૂજ્ય સદગુરુ નિત્ય સ્વરૂપદાસજી સ્વામી એક સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિની શાખા શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની પરંપરા પ્રમાણે દીક્ષિત સંત છે. એમણે પોતાનું ઘર, સગા સંબંધી, માતા પિતા, ધન આદિ બધાનો ત્યાગ કરી વિશ્વ કલ્યાણના હેતુથી સમગ્ર વિશ્વને પોતાનું ઘર માન્યું છે. એમના શબ્દોમાં કહું તો સાધુને સીમાડા હોતા નથી, આખું વિશ્વ સાધુનું ઘર છે. વાસ્તવિકતામાં ઘર સભા આપણે સંસારીઓએ કરવી જોઈએ, પણ આપણે આપણા વ્યવસાય અને વ્યવહારમાં એટલું બધું વ્યસ્ત જીવન જીવી રહ્યા છીએ કે આપણે આત્મકલ્યાણનું સર્વથી અગત્યનું કાર્ય ભૂલી જ ગયા. એટલે જેમણે ઘરનો ત્યાગ કર્યો છે એમણે આપણું ઘર સલામત રહે એવા શુભ હેતુથી ઘર સભાનો પ્રારંભ કર્યો છે. આ ઘર સભા પ્રેમની પરિભાષા છે. આ ઘર સભા પ્રભુમાં પ્રેમ કરવા માટે પથદર્શક છે. આ ઘર સભા પારિવારિક મૂલ્યોને સજીવન કરનારી અમર સંજીવની છે. જમનાદાસ કાકા, મારા મિત્ર સિદ્ધાર્થ, અશ્વિન, સની, રાહુલ અને ચિરાગ અને તમારા ઘરમાં રહેલી નારી શક્તિને બધાને મારા વંદનની સાથે એક પ્રાર્થના કરું છું. મારી એક વાત માનજો, આજથી 1 મહિના સુધી આખો પરિવાર સાથે મળીને ઘર સભા જોજો અને બધા સાથે મળીને એક ટાઈમનું ભોજન ભગવાનને ધરાવીને સાથે કરજો. આટલું કર્યા પછી જો તમને છૂટા થવાનું મન થાય તો રાજી ખુશીથી છૂટા પડજો. મેં મારી દીકરીનું ઘર તોડવાનો ઘણો પ્રયાસ કર્યો. મારા જમાઈ મારા પૈસા, પાવર, પ્રતિષ્ઠા જોઈને અંજાઈ જાય અને મહેતા ગ્રુપને છોડીને નાનાવટીઝને જોઈન કરી દે, એના માટે ઘણા કાવા દાવા કર્યા. પણ આજે મારી આંખ ખુલી ગઈ છે. આજથી હું પણ નિત્ય ઘર સભા જોઈશ. सिद्धार्थ सर, प्लीज टेक रेस्ट. आपको ऐसी हालत में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए. मिस्टर यशवर्धन सर, आप कोर्ट की अपडेट्स मिस्टर अश्विन के साथ शेयर करें. सिद्धार्थ सर को एटलीस्ट 1 month नो स्ट्रेस. इट्स एब्सोल्युटली फाइन डॉक्टर. जय श्री स्वामीनारायण बधाने. जमनादास काका, मेरी कभी भी कोई भी जरूर पड़े बेझिझक बुला लेना. ચાલો હરિકૃષ્ણ. બધાને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. પપ્પા, દાદુ, અશ્વિનભાઈ, રાહુલ, ચિરાગ, ઘર સભા ચાલુ થઈ ગઈ છે. બહુ સાચું. ભગવાનના ભક્તો પરિવારમાં સમતે એકતાથી સુહૃદ ભાવથી રહો. ક્યારે ક્યારે ભક્તો તમારી નાની અણસમજણથી ઠાકોરજી બધું જાય. ધંધો બિઝનેસ સરસ ચાલતો હોય, સરસ બંગલો હોય, સરસ ફેક્ટરી ચાલતી હોય, સરસ ગાડી હોય, કોઈ વાતની મણા ન હોય, પણ નાની અણસમજણને કારણે આટલી બધી સમૃદ્ધિ હોવા છતાંય પણ ઘરમાં શાંતિનો લેશ ના હોય. ઘરમાં 80 ગોઠવેલું હોય, પણ અણસમજણને કારણે બહાર કાઢું પણ અંદર જાણે આગ લાગી હોય. બનેલી રસોઈ એમને પડી રહીને ભૂખ્યા સુઈ જાય પોઝિશન નિર્માણ થાય. આ મહોત્સવને માણ્યા પછી, કથાને સાંભળ્યા પછી ભગવાનના ભક્તો નક્કી કરજો, અમે થોડું ઘણું લેટ ગો કરતા શીખશું. બહુ સાચું કહું, સુખી જો થવું હોય ને તો સ્ત્રી ભક્તો ખાસ સાંભળે. પુરુષ ભક્તો જેને સુખી થવા હોય પોતાના મા બાપને ખૂબ રાજી કરે. જે
પુરુષ પોતાના મા બાપને રાજી કરી શકે, એનું પોસાય તેવું કઠણ પ્રારબ્ધ હશે ને તો આપણે એનું પ્રારબ્ધ એનું કશું બગાડી નહીં શકે, જે પોતાના મા બાપને રાજી કરી શકશે. અને સ્ત્રી ભક્તો યાદ રાખજો, સ્ત્રી ભક્તો જે પોતાના સાસુ સસરાને રાજી કરી શકશે એ જિંદગીમાં ક્યારેય દુખી નહીં થાય, ક્યારેય દુખી નહીં થાય. સ્ત્રી ભક્તો મા બાપને નહીં, એને સાસુ સસરાને રાજી કરવાના છે. અને જે નારી સુખી થવા માંગતો એકવાર સાસરે આવ્યા પછી નક્કી કરી નાખે હવે આજ મારું ઘર છે, આજ મારું ઘર છે. જે પ્રીતિ પોતાના મા બાપમાંથી પ્રીતિ પોતાના સાસુ સસરામાં કરે, જે પ્રીતિ પોતાના ભાઈમાંથી પ્રીતિ પોતાના દિયર જેઠમાં કરે, જે પ્રીતિ પોતાની બહેનમાંથી પ્રીતિ પોતાના નણંદમાં કરે, ખરેખર કહું છું બહુ સુખની પ્રાપ્તિ થાય, જીવન દિવ્ય બને. આઈ એમ સોરી પાપા, શક્ય હોય તો મને માફ કરી દેજો. હવે હું અને પ્રાપ્તિ જીવન પર્યંત દાદુની, તમારી, મમ્મીની સેવા કરશું અને મારા ભાઈઓને પ્રેમ આપશું. મારે જુદું નથી થવું. જોઈન્ટ ફેમિલી ઇઝ અ બોન. સંયુક્ત પરિવાર એક આશીર્વાદ છે. એ મને પરમ પૂજ્ય ગુરુશ્રીના શ્રીમુખની ઘર સભાથી સમજાઈ ગયું છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુવીરશ્રીના વરદ હસ્તે સૌએ કંઠી ધારણ કરીને સત્સંગી થવાનું છે અને ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની ઉપાસના ભક્તિ કરવાની છે. અને હા, આ ઘર સભા આપણે 1 મહિના સુધી જોઈ અને સરદાર ધામ દ્વારા સંચાલિત મંદિરોની પ્રવૃત્તિની પણ આપણને જાણ થઈ. પરમ પૂજ્ય ગુરુશ્રી સરદાર ભાવનગર, મહુવા, વિદ્યાનગર, સુરત, બોટાદ, મુંબઈ આદિ મંદિરો દ્વારા વિદ્યાદાનનો અદ્ભુત પ્રકલ્પ ચલાવી રહ્યા છે. આજે હજારો વિદ્યાર્થીઓ નિઃશુલ્ક રહેવા જમવાની અને કોલેજ આવવા જવાની વ્યવસ્થા પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. ભવિષ્યમાં 10,000 થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ નિઃશુલ્ક ભણવાનો પરમ પૂજ્ય ગુરુવરશ્રીનો સંકલ્પ છે. જો ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની કૃપા આપણા પરિવાર પર થાય અને આપણું ગયેલું ધન, આપણી પ્રોપર્ટી, આપણું બિઝનેસ ફરીવાર બેઠો થાય તો આપણે બધા સંકલ્પ કરીએ આપણી ઇન્કમનો 50% ભાગ સત્સંગના વિકાસ માટે પરમ પૂજ્ય ગુરુશ્રીના ચરણોમાં અર્પણ કરી દેશું. હા ભાઈ, તારી વિચારધારાને મારા સલામ. પરમ પૂજ્ય ગુરુવરશ્રીએ 100 કરતા અધિક મંદિરો નિર્માણ કરાવ્યા, હજારો ઘરોમાં પધરામણી કરાવી, દાનવ જેવા માનવીને માનવ બનાવ્યા. આવા સત્પુરુષને આપણું ધન અર્પણ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો, એ એક સૌભાગ્યની વાત છે. सब लोग मुंह मीठा करेंगे. किस बात का मुंह मीठा समझी जी? वो तो वकील साहब ही बताएंगे. Good news, Siddharth sir. Congratulations. We have won our case in Honorable Supreme Court of India. Supreme Court has ordered to unseal all the assets and the bank accounts of Mehta Group of companies. You are now entitled to carry out your business activities as before. Once again, congratulations, sir, to regain your net worth of 7,000 crores. બધી ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની કૃપા અને પરમ પૂજ્ય સદગુરુ નિત્ય સ્વરૂપદાસજી સ્વામીના આશીર્વાદ છે. બેટા સની, તારો સંકલ્પ સિદ્ધ થઈ ગયો. આજથી મહેતા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ જેટલું પણ કમાશે એમાંથી 50% સત્સંગને અર્થે વાપરશે. ઘરસભા તો હું પણ રોજ જોઉં છું અને મેં પણ પરમ પૂજ્ય ગુરુશ્રીને મારા આધ્યાત્મિક માતા પિતા માની લીધા છે. આજથી સમજીજી, હું પણ સંકલ્પ કરું છું કે નાનાવટી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝની ઇન્કમનો પણ 50% ભાગ સત્સંગ માટે અર્પણ કરી દેવો. That's great, Dad. હા બેટા, દેર આય દુરુસ્ત આય. તો ચાલો બધા સરદાર જઈએ, ઘર સભાનો લાભ લઈએ અને ભગવાન અને પરમ પૂજ્ય ગુરુના દર્શન કરીએ. હા બાપુજી, જઈએ. हे डैड, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन. कितने दिनों के बाद खुशियाँ लौटी है. पूरे परिवार के साथ मनाली घूमने जाते हैं. सरदार बाद में चले जाएंगे. Now you are completely healthy. You can go to Manali. I will suggest to get pollution-free, oxygenated air. ઓકે દેન ડન. આપણે પોતાની વેનિટી બસથી મનાલી માટે કાલે સવારના નીકળશું. હું નથી આવતો, હું ઘરે રહીશ, ભજન કરીશ. તમ તારે તમે જઈ આવો. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. કાકા કેમ છો? અરે ઘનશ્યામ, તે અમારા પરિવારને તો ઘર સભા જોતા કરી દીધા, મને તો અક્ષરધામનું સુખ આપી દીધું. કાકા, હું તો નિમિત્ત માત્ર છું. કરતા હરતા તો ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ છે. जमनादास मेहता कौन है? मैं हूँ. क्यों, क्या हुआ? और आप यहाँ, सब ठीक तो है? आई एम सॉरी टू से, बट जिस बस में आपकी पूरी फैमिली मनाली पिकनिक के लिए जा रही थी वह बस खाई में गिर गई है. अश्विन, सनी, राहुल, चिराग एंड सिद्धार्थ कोमा में हैं.
उनकी पत्नियां बेहोश है, उन्हें गहरी चोट आई है। ऑल फैमिली मेंबर्स आर हॉस्पिटलाइज, ऑल आर सीरियस। अब तो भगवान ही बचा सकता है उन्हें। अगर कुछ पता चलता है तो मैं बताता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। આ બધું શું થઈ ગયું ઘનશ્યામ? આ પાપી ડોસો કેટલો અભાગ્ય હશે. વિચાર તો કર, મૃત્યુને ગળે લગાડવાની ઉંમરમાં મારા દીકરા અને પૌત્રના જીવન મરણની વચ્ચે જોકા ખાતો જોઈ રહ્યો છું. ધીરજ રાખો કાકા, ભગવાન બધું સારું કરશે. એક વસ્તુ વિચારો, પરિવારના બધા સભ્યો જીવિત છે. બહુ મોટી ઘાત હશે એ ટળી ગઈ. આવો આપણે ઘર સભા જોઈએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. ચોક્કસ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ કંઈક રસ્તો બતાવશે. તમે અદ્ભુત બીજ મંત્ર આપ્યો છે. અહીંયા બેસીને સાંભળે છે, ઘેરે બેસીને ઘર સાંભળે બધાને પૂછો. અદ્ભુત બીજ મંત્ર છે. સ્વામી કે આ મંત્રના જાપથી ગમે તેવી આપત્તિ વિપત્તિ છે તો ટળી જાય. સ્વામિનારાયણ ગમે તેવી આપત્તિ વિપત્તિ છે તો ટળી જશે. સ્વામીના માટે વિધિ બતાવ્યો. સ્વામી કે આ મંત્રને કોઈ 11,000 મંત્રનો જાપ જપશે, 15 દિવસ સુધી જાપ જપશે. સ્વામીના શબ્દ 15 દિવસ સુધી આ મંત્રનો કોઈ જાપ 11,000 મંત્ર જપશે, એની ગમે તેવી આપત્તિ વિપત્તિમાંથી ઘનશ્યામ, આ બીજ મંત્ર હું આજીવન અનુષ્ઠાન કરાવીશ. જો મારો પરિવાર હેમખેમ ઘરે પાછો આવી જતો હશે તો. કાકા, ચોક્કસ તમારો સંકલ્પ પૂરો થશે. આ અનાદિ મૂળ અક્ષર મૂર્તિ સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીનો આપેલો ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણનો અગાધ મહિમા ગાતો બીજ મંત્ર છે. સરદાર ધામમાં પરમ પૂજ્ય સદગુરુ નિત્ય સ્વરૂપદાસજી સ્વામીશ્રીના માધ્યમથી આ બીજ મંત્રની પીઠની સ્થાપના થઈ છે. સંતો તથા પવિત્ર ભૂદેવો દ્વારા અખંડ આ યજ્ઞ થાય છે. આ બીજ મંત્રના યજ્ઞમાં આહુતિઓ અપાય છે, જેના માધ્યમથી જીવાત્માની આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિનો નાશ થઈ જાય છે. શું સાચે? હે ભગવાન, તારો કેટલો મોટો ઉપકાર છે. શું થયું કાકા? બધા ભાનમાં આવી ગયા અને હવે ભયથી પણ બહાર છે. ટૂંક સમયમાં જ પાછા આવી જશે. बापूजी, जय श्री स्वामीनारायण. घनश्याम नो फोन आया होतो. उसने मुझे बताया कि कैसे भगवान श्री स्वामीनारायण के बीज मंत्र द्वारा हमारे प्राणों की रक्षा हुई. ખરેખર દાદુ, આજે ઓલા કીર્તનના શબ્દો સત્ય થાય છે. આજ કળયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી, સ્વામિનારાયણ સત્ય છે. પ્રેમી ભક્તોની હામો પૂરે પ્રભુજી, સ્વામિનારાયણ સત્ય છે. આજ કળયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી, સ્વામિનારાયણ સત્ય છે. હા, ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પણ સત્ય છે અને એના સંતો હરિભક્તો પણ સત્ય છે. ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસ અલગ થવાનો વિચાર ન કરશો. મારું માનો તો ડોંબીવલી સ્વામિનારાયણ સિટીમાં ફ્લેટ લઈ લ્યો. ત્યાં 1 BHK, 2 BHK અને 3 BHK ના આલિશાન ફ્લેટ્સ ઉપલબ્ધ છે. અને એમાં પણ 1 BHK અને 3 BHK તો જોડી ફ્લેટ થઈ શકે છે. અને સર્વથી અગત્યની વાત તો એ છે, શ્રી સ્વામિનારાયણ સિટીમાં આપણા ગુરુવર્ય શ્રી પરમ પૂજ્ય સદગુરુ નિત્ય સ્વરૂપદાસજી સ્વામી ગ્લોરી ઓફ મહારાષ્ટ્ર એટલે મહારાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું સ્વામિનારાયણ મંદિર નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે. ત્યાં અખંડ સ્ત્રી ધનના સાચા ત્યાગી સંતો નિવાસ કરીને રહેશે. લક્ઝરી, સત્સંગ અને તમારી આવનારી પેઢીને સંસ્કાર, આ બધું એક જ પેકેજમાં. વાહ ઘનશ્યામ અંકલ, તો હવે જલ્દી બુકિંગ કરાવીએ સ્વામિનારાયણ સિટીમાં ફ્લેટ અને અક્ષરધામના સુખનો અનુભવ કરીએ. સુખી કરે ભગવાન સદા સુખી કરે, સુખી કરે, સુખી કરે ભગવાન સદા સુખી કરે.
અત્રે મુખ્ય યજમાન પરિવાર સ્વામિનારાયણ સિટી વતી અત્રે કોઈ પણ સદસ્ય અત્રે આવશે. મુખ્ય યજમાન પરિવાર કથાના મુખ્ય યજમાન શ્રી સહયજમાન શ્રી જેઓ ઉપસ્થિત ઉપર આવી અને પંચમ દિવસની વિરામની આરતી આપણે લઈશું. યજમાન પરિવાર ઉપર પધારે.